मुझे लगता है कि मैं एक टाइम पे प्रॉपरली जस्टिस एक चीज को कर सकता हूँ। Okay. आउटसाइडर इनसाइडर क्या होता है यार? मतलब मैं जब दिल्ली से आया था, तब किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे फोन करके थोड़ी बोला था तुझे स्टार बना दूंगा। Hi Sakib, how are you? How was the lockdown? It's been difficult यार. The lockdown's been difficult, but lockdown में हम क्रैकडाउन लेके आ चुके हैं, and all the appreciation that I'm getting for it, it's giving me a very warm feeling in my heart. The lockdown's been tough. The first 2-3 months of the lockdown were tough because there was a lot of uncertainty as to क्या हो रहा है. But now I think with the whole we are getting used to it, and now I think I'm starting my life keeping in mind that there is a pandemic, so I have to be safe. I have to take certain safety measures, but I think life has to go on. There's a saying, no, the show must go on, so the show has to go on. Okay, so what all did you do at home while keeping indoors? Nothing. The first 2 months, I don't think I did anything at all. I was like a vegetable on my couch. जहां पर मैं अभी बैठा हूँ, वहां मैं पूरा दिन लेटा रहता था, और मेरे सामने ही मेरा टीवी है, उस पे कुछ ना कुछ देखता रहता था. पहले 2 महीने तो इसी में निकल गए. समझ ही नहीं आ रहा था, अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा. कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लग गए थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, और ये सब तो एक बड़ा अजीब सा एक माइंडसेट में था मैं. But then I slowly told myself that I need to find purpose in my life. I need to get back to work, and that is when, in fact, I shot a film in COVID times. मैंने एक पूरी picture start to finish. It's for another platform that will come out in October. That film is called Comedy Couple. That will come out in October. ये जो क्रैकडाउन है, ये मैंने लॉकडाउन शुरू होने से 10 दिन पहले ही खत्म किया था. सो आई वाज वेटिंग कि ये कब शो खत्म होगा, कब पूरी तरह बन जाएगा और आप सबके सामने आ जाएगा. बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सारे पोस्ट प्रोडक्शन ऑफिसेज जो थे वो शट थे, स्टूडियोज बंद थे. So people had to work round the clock to make sure that the shows finished. You play the central part in Crackdown. You are investigating officer, right? Hmm. So on a जी. lighter note, you are a severe diabetic on the show, and you Hmm. still manage to have ripping biceps and a body to die for. So how did that happen? Do the two things go together? They can, if you control your diet, if you make sure that you take care of your health. I think any and everything is possible. एंड बट रियल लाइफ में मैं डायबिटिक नहीं हूँ, तो बनाना आसान था. बट अगर आरपी को रियल लाइफ में वो बनाना होता तो उसके लिए मुश्किल जरूर होता, बट इम्पॉसिबल नहीं होता. That's the spirit. You seem to have worked really hard on your body, and you had a few shirtless scenes which looked compulsory कि यार body बनाई है, ये तो होना ही पड़ेगा. वो आइडिया किसका था? आपका था कि यार मैंने तो बनाई है, मैं तो दिखाऊंगा, और इस वजह अपूर्व लाकिया's आइडिया? नहीं यार, ऐसा किसी का भी आइडिया नहीं था, बट आई थिंक वो स्क्रिप्ट में ही ऐसा लिखा गया था. एंड स्पेशली जो क्लाइमैक्स के सीन की आप बात कर रहे हैं, जो लास्ट एपिसोड के सीन की बात कर रहे हैं, नहीं, वो अपूर्व लाखिया का आइडिया था. श्रेया पिलगांवकर वाला भी था सीन in which you are looking for your t-shirt and you come bare bodied and take your t-shirt and wear it. So बड़ा एक वो वॉक तो आता है स्क्रिप्ट में ही बेडरूम था. में से निकल के. अरे वो मैं कपड़े ढूंढ रहा था यार, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे मुझे मेरे घर पे. तो अब क्या, जब कपड़े नहीं मिलेंगे तो बंदे ने टी शर्ट नहीं पहनी होगी ना. Okay, thank God the denim was in place. Okay. हाँ. वो नहीं उतारूंगा, वो नहीं उतारूंगा. Okay, फ्यूचर में भी नहीं उतारेंगे, ठीक है. नहीं, आई डोंट थिंक कभी उतारूंगा यार. Okay, okay. Just now you spoke about a film which you have shot in lockdown. So, were there any challenges? You were talking about Comedy Couple with जी. Shweta. जी. Shweta Prasad, yeah. जी, श्वेता बासु प्रसाद. वर देयर एनी चैलेंजेस? 100%. बहुत एक ऐसा फील हो रहा था मुझे यार, कि मैं एक साईफाई फिल्म के सेट पे हूँ. सबने वो शील्ड, मास्क, ग्लव्स, पीपी किट पहनी हुई है मेरे इन एंड अराउंड. तो पहले 2 दिन तो बहुत ही एक वियर्ड माइंड स्पेस में था कि मैं सोच रहा था यार ये होगा कैसे. बिकॉज यू कांट बी, बिकॉज द वर्ल्ड दैट वी क्रिएटेड इन दैट फिल्म, दैट इज अ कोविड फ्री वर्ल्ड. हमने उसमें कोविड-19 की बात ही नहीं की है. बट हमारे रियल वर्ल्ड में द कोविड-19, सिर्फ कोविड-19 की ही बातें हो रही थी. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट 2 days टू डिटैच माई सेल्फ
And when I was acting to act like that there was no pandemic. So पहले 2 दिन प्रॉब्लम हुई. मुझे तो एक टाइम के लिए ये भी लगने लगा, मैंने कहा यार एक्टिंग आती है कि नहीं आती है मुझे, ये मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ दैट यार आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस फिल्म विलिंगली. आई लाइक द स्क्रिप्ट, आई लाइक द पीपल हु आर मेकिंग इट. So I'm going to take safety measures. I'm going to get a COVID test every 4 days because I'm meeting new people. But I have to act. That is my primary job, and I don't want that to get affected. तो पहले 2-3 दिन थोड़ा अजीब था, बट उसके बाद जो मजा आया उस पिक्चर को बनाने में यार. And I realized one thing, when I was working on that film, that I love being on a film set. There is nothing better in my life than being on a film set. The happiness I get when somebody says action, uh, it is just a different feeling. So I'm so blessed, and I'm very grateful to the Almighty that I got to work in a time like this, when the world is going through so much, when people are losing so many jobs, where there are pay cuts, everything is being downsized. I got to work in a time like this and make a proper feature length film. So I'm just grateful and happy that I got to do that. We'll also see you in 83, which is delayed. We could have seen that earlier. So, and you play Mohinder Amarnath. So that's he's a जी, cricketer. So, was each player जी. given training to adopt the respective style of that concerned cricketer? The film is taken a 100%. long time. मतलब and how Kabir sir is, he's very particular about how he wants everything, and he put everybody through a process, and how he had designed it, that it was very beautiful. Yeah, he made sure that every actor who's playing whichever cricketer got to spend time with that cricketer, got to pick up nuances of that cricketer, got to pick up body language, the way they talk, the way they smile, the way they play their cricket. So throughout the process, I've been very fortunate that I got to spend a lot of time with Mohinder Amarnath. In fact, he used to come and help me train. He tried to help me master his bowling action to his batting stance. So he did help me a lot. And Kabir sir also, all kudos to him to have put us through this process, because it's just been a very fascinating film to shoot. I've been a cricket lover all my life, and I don't think अगर मैं लाइफ में कभी क्रिकेटर बन भी जाता, तो जो मैंने ये लाइफ उस फिल्म को शूट करते हुए जी, वो मैं कभी जी पाता. Not as a real cricketer. Not even like I got to shoot at Lords. I was matlab I was at the mecca of cricket. I was interacting with Mohinder Amarnath, Kapil Dev, Sunil Gavaskar, Balwinder Singh Sandhu. I had access to these guys. I met Clive Lloyd. I met Viv Richards. Matlab, all my childhood dreams have been fulfilled by that film. Yeah. Okay, so do you have something to tell about your particular part, being part of I the? think it's too early to talk यार. जब वो फिल्म आएगी तब उसकी बात करते हैं रुचि. अभी तो टाइम है. अभी पता नहीं थिएटर्स कब खुलेंगे और कब वो फिल्म रिलीज होगी. Whenever the time's right, we'll 100% at length talk about that. Okay, this is for sure. It will come in theaters, big screen. We all want it to. Let's put it like that. Okay, let's But go. like you said, बहुत uncertain times है. We don't know when theaters would open right now. I think the date that is announced is for Christmas this year. Hopefully, theaters should open by then, and we get to see the film in theaters. Yeah. Sakib, you have had a long, but like you don't deliver like 4-5 films a year like many people do, or like 2-3 projects a year and one film after another. ऐसे नहीं होता है. You have like a long, consistent journey. So, do you feel somewhere यार outsider has been a disadvantage for you? Could you have done better? Something like that. Does it ever hit your mind? There are many नो documentaries. यार, नो नॉट एट ऑल. मतलब अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं. ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्में बहुत ऑफर नहीं होती हैं, बट आई लाइक टू टेक माय टाइम विद फिल्म्स. आई लाइक टू टेक माय टाइम विद थिंग्स. I last did, I think, before Crackdown, the last thing that came out of mine was Rangbaz, which was a year and a half ago. Also because the whole of last year I was shooting 83, and abhi tak 83 bhi aa chuki hoti. But now that you see that this year, in fact, I have Crackdown that releases today. Then I have Comedy Couple that releases in October. Then I have 83.
hopefully in December. So I will have 3 releases this year. I don't plan my career like that यार. मुझे लगता है कि मैं एक टाइम पे प्रॉपरली जस्टिस एक चीज को कर सकता हूँ, और मैं वो एक काम करके फिर दूसरे काम को पकड़ता हूँ. मैं वैसा नहीं हूँ इन माय थॉट प्रोसेस कि मैं अपने अगले 2-3 साल प्लान कर लेता हूँ कि मैं ये इस साल में ये 3 पिक्चरें करूंगा, अगले साल वो 2 पिक्चरें करूंगा. आई डोंट थिंक आई एम इक्विप्ड mentally to do that. I don't think I'm that kind of an actor. I like to invest all I have in one project, whether good, bad, or ugly, however it turns out. All my loyalties are towards one project, and then when that gets done, I like to move on to the next. Okay. आउटसाइडर इनसाइडर क्या होता है यार? मतलब मैं जब दिल्ली से आया था, तब किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे फोन करके थोड़ी बोला था तुझे स्टार बना दूंगा. मैं आया यहाँ, खुद डिसाइड करके आया कि मुझे हीरो बनना है, एक्टर बनना है, और मैंने आके अपनी मेहनत की. ये मेरी जर्नी है. मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता इसके लिए यार. दीज आर माय डिसीजंस. और स्पेशली इन टाइम्स लाइक दिस, जब इतना सारा काम हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए हैं, इतना सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट बन रहा है, अब तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना चाहिए. अब तो सिर्फ काम करना चाहिए. फाइंड द राइट काइंड ऑफ वर्क फॉर योरसेल्फ एंड गो फॉर इट यार.